You might wonder, what is this battle? Why IIT is in battle and so on. So it all started with a professor, Ajanta Subramanyam in Harvard, who started writing about Harvard, about IITs as a bastion of casteism and racism. And her thesis that IITs were created for perpetuating superiority of upper castes and exploitation of Dalits. And this is in the DNA of IITs. It's part originally from the very beginning. Everybody gets blamed for this. And the argument is made that merit, IIT is very proud of merit. They have this JE exam, all these things. But merit is a sham, because merit is just a cover-up for privilege, caste privilege. So certain people have privilege, they get better coaching. They get better, the teachers are caste biased. They get all sorts of benefits because of their birth, their privilege. And so the idea is that all this is being masked and hidden in the name of merit. But merit is not really merit. पहली ब्रेकिंग इंडिया थी जो हमने बहुत साल पहले बुक लिखी थी, दैट वाज मोर के भी विलेजर्स जो पुअर विलेजर्स हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो तो ब्रेकिंग इंडिया थी ग्रास रूट्स पे. अब ये ब्रेकिंग इंडिया है द टॉप लेवल, टेक वर्कर्स, कॉर्पोरेट पीपल. अब वहाँ पर जाके थोड़ी इंडिया को कैसे हाउ टू ब्रेक इट इनटू पीसेस, दिस इज वेरी डेंजरस. What was the function of Varna as a way of dividing social capital? The social capital should not be concentrated with one group. It should be intellectual capital, political capital, financial capital should be separate. That is how the Varna started. And it was not by birth. So then later in society, Jatis are formed. Jatis are professional associations that keep track of, that try to, control a particular profession. कोई masons हैं, कोई carpenters हैं, कोई chef हैं, कोई fishermen हैं, कोई farmer हैं, कोई कैसे तरह के weavers हैं, इस तरह के जातिस form. Ambedkar is also mixed up. वो कहता है he wants to convert people to Buddhism. ठीक बात है. Buddha dharma is a good fight. लेकिन उनका जो Buddhism का interpretation है वो ठीक नहीं है. He says that the meditation is not needed. Meditation के बिना how do you have Buddhism? Buddhism is known for its meditation. Meditation तो बहुत ही जो उनकी बात है, meditation की तो बात है. तो but Ambedkar very clearly lies कि मैं Ambedkar इस ज़माने में meditation का इतनी importance नहीं है, and he doesn't practice it. And there is some Buddhism में है 4 noble truths जो उनके main idea है, 4 noble truths कहलाता है. He also doesn't promote that. तो उसके बिना बुद्धिज्म क्या हुई? इट इज नॉट रियली बुद्धिज्म, वो तो कुछ और बात होगी ना. Today we have with us Rajiv Malhotra sir. Sir, it is indeed a great pleasure to have you. Sir was trained initially as a physicist and then as a computer scientist specializing in artificial intelligence in the 1970s. After a successful corporate career in the USA, he became an entrepreneur and founded and ran several IT companies in 20 countries. However, he exited all for-profit activities in the 1990s with a view to give something back to society after a successful business career. He founded a non-profit called Infinity Foundation, which is based in Princeton, United States. It is his life's mission to counter what he has coined as breaking India forces. In this quest, he has coined several phrases which have now become part of the popular lexicon, such as breaking India, Indian grand narrative, Hindu open architecture, mutual respect, history centrism, digestion, Hindu phobia, and many more.
I now request Dharmadhikari sir to felicitate Rajiv Malhotra sir. And the best gift of it all. Given the occasion, the speaker and the city, we thought it most appropriate to award sir with a frame of the greatest proponent of building India forces, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Rajiv Malhotra sir has also authored several best-selling books, and it is indeed our great pleasure that his 4 latest books, we will be launching them today. I now request Dharmadhikari sir and Rajiv Malhotra sir to please launch the 4 books titled Varna, Jati, Caste, The 10 Heads of Ravan, The Battle for IITs, The Power of Future Machines. Sir, please. And probably the greatest book, Snakes in the Ganga. I now request Rajiv Malhotra sir to please address the audience. So this is two great events in the same day. This is pretty amazing. I was here this morning, and I must say it was a thoroughly enjoyable and very sort of intellectually stimulating discussion we had. Many of you were probably here in the morning also. I see some of the same faces, but now it's also double up there also. It's all full, so that's very nice, and many new people. So in the morning, we discussed the book Snakes in the Ganga and took a lot of questions on that. So some people are new, so I should also give you a little bit on that. But I want to not make it repetitious, and therefore I'll talk about the new books as well. Now, I'll kind of mix it up. So by the time we're done, you'll have a good background on all these books. You might wonder, we just launched this huge book just less than, say, 5-6 months ago. And now we're launching 4 more. So you might say, well, how is it happening and why so many books? But let me tell you, out of the 4 new ones, 2 I'm authoring, 2 others my team is authoring. So we are launching as an institution, it's Infinity Foundation. I'm writing some part of it, but most of it is written by other people. So let me first start backwards. Let me first tell you about those books. This one, 10 Heads of Ravan, has it's a very interesting theme, a very provocative theme, one that requires a lot of courage. Basically, the idea of this book is that Ravan has been reincarnated and now he's an intellectual. So as an intellectual, his 10 heads are the 10 intellectual personalities. 10 intellectual personalities. So this idea started a year before COVID. We were having our annual get-together of our team in Rishikesh. And so this was the Shara time at then. And so I generally for some festival, I kind of come up with some idea for an animation, and then our graphics team makes an animation. So I came up with this idea that since it's Dashera, so what do we do with the head with Ravan? And this idea came that maybe the 10 heads are 10 of these scholars nowadays who are anti-India and anti-Hindu. That is the 10 heads today. So we came up with 10 heads of Ravan, as one was Shashi Tharoor,
and one was Irfan Habib and Ramchandra Guha and Devdutt Patnaik, people like that. And then many Americans, many white people, Wendy Doniger, Sheldon Pollock, Audrey Truschke, these sort of people. So it was a fun thing, and it really took off. So we had this Ravan looking head, and there were 10 faces of these people, and then each one would pop up and start speaking some anti-India stuff, and it would then the next one would pop up and say something. So this whole thing was just a few minutes, and people really liked it. So we discussed that maybe we turn this into a book. And the idea was we have young team, and I'm training them to be intellectual Kshatriyas. So I said each of you pick one head and focus on this. And the rules are, you're not allowed to insult or say something personal, but only talk about their work, academic. You cannot make fun of them. You cannot be abusive. You have to read as much as possible about that person, whatever they have written. Highlight everything that you think is objectionable, that they have written is incorrect, not emotionally, not because it hurts you, but because it is false, it is biased. And then you have to reference all that, proper citation and reference. And then you have to give a rebuttal, your response, in a very thoughtful way, very intellectual way. It has to be serious response, cannot be something, just for tamasha. It cannot be just poking fun at them. And this was done during the whole COVID. They worked on this. And I must say they did a great job. Then each draft has to be reviewed by all the other people on the team, and the feedback has to be incorporated. Then after that, I read it, gave my feedback, and then we had external editors read it, give their feedback. So this book is the product of a lot of hard work on the part of our young intellectual Kshatriyas. We are making a home team, and this is the way we make home team. And we launched this at Swadeshi Indology. We call our conferences, we call them Swadeshi Indology. Indology is the study of India, and Swadeshi means through our drishti. So we did a Swadeshi Indology conference. This is our 8th or 9th. This one was in Delhi University, and we launched this book. We invited all the 10 heads to come and participate. Not one of them showed up. And we sent them their article and said, this is what our team has written. Now, you may disagree, but let's have a conversation. There's nothing disrespectful. There's no slander, no defamation. We just writing about your work and where we disagree. And we can be wrong. You can tell us where we are wrong. But let's have a discussion. And we also brought in senior scholars to comment. Senior scholars from, the various parts of India to comment. 1 or 2 came from overseas also. But the 10 intellectual personas of Ravan never showed up. Some of them wrote some very nasty emails saying, how dare you write all this about me, kind of thing. And so this is what we did. We did not cancel them. We wanted to include them. They canceled themselves. So this is the result. This book is a result of that. And now we'll put our team to work on something else. We'll do another project. And we're expanding our team. Those people who are scholars, who want to pursue scholarship, we can include them. So we also wanting to work together and see how we can mentor more scholars of that sort. That's that book. Then the other one, Power of Future Machines, also is written by multiple authors. Not all mentored by us. One is a retired military general writing about AI and the army, military applications of AI. Then there are 2 Europeans writing about geopolitics, how AI affects geopolitics, US, China, India. And then, of course, there are our team people who are writing about AI and philosophy or physics or AI and, different social issues, issues of community and divisiveness that AI can create, and so on. So that's what that book is about. These are 2 books that came out of trying to create a home team. The books that are myself, and now I have a co-author also. One of them is called The Battle for IITs. Now,
This is a very interesting book because you might wonder what is this battle, why IIT is in battle and so on. So it all started with a professor, Ajanta Subramanyam in Harvard, who started writing about Harvard, about IITs as a bastion of casteism and racism, and her thesis that IITs were created for perpetuating superiority of upper castes and exploitation of Dalits. And this is in the DNA of IITs. It's part originally from very beginning. Everybody gets blamed for this. And the argument is made that merit, IIT is very proud of merit. They have this JE exam, all these things. But merit is a sham because merit is just a cover up for privilege, caste privilege. So certain people have privilege, they get better coaching. They get better, the teachers are caste biased. They get all sorts of benefits for because of their birth, their privilege. And so the idea is that all this is being masked and hidden in the name of merit. But merit is not really merit. That's what her thesis is. She's a Harvard professor. And the book is published by Harvard University Press, which is the world's leading academic publishing house. So you imagine how a book like that gets published without peer reviews, without any contrarian point of view, no contrarian point of view. And this is a book with no data. It's a lot of examples of so and so said this to me in an interview. So and so had this incident in the cafeteria. Like that, some random incidents which are not statistically significant are used to come up with all this, and they're not even verifiable because she uses the first name of some people, and we are supposed to take it at face value. This kind of ethnic study, ethnic diary, like you travel, like somebody's going around just interviewing people, is used to come up with a very serious allegation. Now it turns out this work started a decade ago. It started in Delhi School of Economics, and some people who were writing these kind of things are very extreme leftist people a decade ago. And then Ajanta Subramanyam picked it up, brought it to Harvard. Harvard encouraged, said, wow, this is a good idea, go for it. And so this became a big thing. And these books are getting awards. They are part of the Harvard curriculum. And this is now commonly taught all over US in various universities, this idea. So then, strange thing is that this has been going on for 10 years. Nobody in IIT wrote a review. No criticism of this book. No acknowledgement of this book. Not anybody bothering, which is sad because our people should be responding. But no, ours is the first response. And IIT is, of course, very grateful that we have responded. Now, next to this comes a man called Suraj Yengde, who is a Dalit activist. He's brought into Harvard to create Gadar. And Harvard Kennedy School celebrates him as a very important fellow of the Harvard Kennedy School. And he is sort of the Dalit in charge of creating this thing, this whole ruckus. So he come up with this theory that Dalits are the blacks of India and non-Dalits are the whites of India. And he's telling Americans that racism, like in America, also exists in India. And he's become unified with the African Americans to unify them as the brothers of Dalits against India and its whole legal structure and its whole history, background, everything is sort of casteist, racist. So that thesis and Ajanta Subramanyam's attack on IITs became merged as one big thing. And then someone called Soundarya Rajan, another Indian, it's Indians doing all this, in New York, starts an organization called Equality Labs. And this is an organization that claims to be studying caste bias in America, caste bias among Hindus in America, not in India. And says that they've done studies to show that all these tech workers who are coming from India, they are caste biased and they are prejudiced against lower caste. And she claims she done survey that says so many % of the Dalits in America are abused and this many people are saying this and that. They're all afraid to speak like that.
So, of course, this took off as a big surprise because it was backed by Harvard and all these African Dalit, they're called Afro-Dalit. These are called Afro-Dalit, these such people. So, the Afro-Dalit people got heavy backing from the ultra-left, and this survey of theirs, making these claims, never verified and later found to have a lot of bogus facts in it. It was covered big time in Washington Post, Wall Street Journal, all these liberal left-wing, kind of press, also in Europe. So these ideas kept building momentum. And then an African American wrote, Wilkerson, her name is Wilkerson. She wrote a book that says that caste and race are the same thing. And she got her idea coming to India with some Ambedkarites. Ambedkarites brought her, and she went and interviewed a lot of people, and with the influence of Harvard people also. And so she wrote this bestseller, New York Times #1 bestseller. And she's a Pulitzer Prize winner. And it was an Oprah Book of the Month. So you can see, I'm not talking about people on the fringes. These are very central people, very powerful people. So this goes into circuit, all this talk. Now all this goes on and nobody from India responding. Nobody from Sangh, BJP, Indian government, gurus, IITs, nobody with institutional authority and clout responding. So we are responding as individuals. This is very interesting, we're responding. Now, the momentum they built did not stop there. They decided to file a lawsuit against Brahmins in Silicon Valley. And so they picked a company, Cisco, you all know, is a big company. They've got some tens of thousands of tech engineers from India, like many companies have. And they found one Dalit who filed a case that this boss of mine is Brahmin, and so he's abusing me. And so this went to court. And Cisco dragged into court, that Brahmin fellow, poor fellow, dragged into court. He had to run away. He called me from somewhere in another country, wanting my advice and help, and I've been off the record talking to him. So that is a case. Now, of course, Cisco defended that we don't believe in this caste bias. We are not having caste bias. But all of this shook up Silicon Valley because of the bad press. So then these people went to the big shots in Silicon Valley like Microsoft and Facebook and Amazon and said that you too have a caste problem. You might be next getting sued. So the thing to do is you should sensitize your management about caste problems of Indians. And we will conduct caste workshops to train you about caste problems. We'll tell you the history of caste in India, how the Vedic tradition is filled with caste abuse, and how the Dalits are being oppressed. And the tech workers are product of mainly places like IIT is one example, but similar places. And these tech workers bringing casteism into United States and corrupting your society, teaching caste habits to your people also. And this is violating American law because if this caste is racism, there are a lot of tough laws against racism. So the racism laws have to apply. So this is when you write this kind of a warning to a very big tech company, they get scared. They don't want to deal with it. They have no idea what are they talking about. Many of them said, we have so many tens of thousands of Indians, we never had any problem, nobody complained. Nobody complained. So what is all this? But in order to kind of listen to these people and give them some money and so they'll run away, they'll leave them alone, most of the tech companies in Silicon Valley let them conduct workshops. So then I got calls from Indian tech workers in places like Microsoft and Facebook, many of them saying, we are being insulted, we are being asked to sit in these big workshops, and Indians are being asked to sit, and these people conducting slides and talking about how the Vedic tradition has this bad thing and that bad thing, and we're being insulted. We are so much abuse about our tradition, so much nonsense. And we've been told, just sit quietly, listen. If you argue, then they will say that you are racist. You are arguing, you are in denial. You should confess. You should confess and apologize rather than arguing. Even if they're talking nonsense, just sit and listen. One of them told me that Satya Nadella sat in one of these meetings
quietly for several hours, did not say a word, did not ask a question or raise any objection or issue. He just sat quietly, listened to the whole thing and said thank you and left at the end. And so did everybody else. And then they want to go to another department, conduct the workshop, another department. So like this, these people are out in Silicon Valley making a lot of money. One person told me that they're charging $75,000 per hour. $75,000 per hour for teaching them about caste and warning them that in your own company you have this caste problem you don't know about, but you should know about. We'll tell you about it, like that. So this is become a very big thing, obviously. And for a long time I've been writing, advising people in India. The Indian consulate in the Consul General in San Francisco does not want to do anything about it. He's too scared also. You see, that's his job. It's not my job. It's their job, because these people are Indian citizens. And the tech industry is a very big Indian industry. And Indian citizens from a major tech industry are being accused of all this stuff. It is a job of the Consul General to... Now, he's a very nice man. He brought me, when I told him that, why aren't you doing anything, invited me to his house, had lunch and all that stuff, very nice, polite and all that, but didn't do a darn thing for these people. And so, nobody doing anything for our young people. And they're very nervous. And there are many of them say to me that, look, we have been told that, nowadays they are laying off people and we are on some visa and we may be sent back to India and all that. We may be asked to, go back and all. So we can't raise any issue. So we just sit quietly. And it's very, very insulting. And the white friends of ours, American friends, afterwards they tell us, is that how you are? What kind of people you are? And we are not allowed to even defend ourselves. And also many of them don't know how to defend themselves. So this book this book tells you what has happened and how to respond. How to respond. So it is for our people. Now, I went to Bay Area and met the Indians who have become billionaires, saying, you should help the young people. You are become billionaires. Nobody's going to bother you. You made your money. You're very strong and solid. But what about the young people? Come on, let's help them. And some of them want to do lip service to it, but they haven't really invested in any substantial way. Many of them they don't want to get involved. You see, our people are also selfish. मैंने अपना बना लिया है, हमने अपना बना दिया है पैसा, तो हम क्यों बीच में शामिल हों? हमको क्या पता? आप ये उनकी बात है, सरकार करेगी, वो करेगा, क्या पता? तो कुछ ऐसे, मतलब हमारे लोग ऐसे बोलना शुरू करते हैं कि हम तो नहीं बीच में आएंगे. ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम बीच में क्यों आए? That sort of attitude. So then I was invited to, I met some people from IIT in USA who try to help me, who want to help me. Then I was invited to the IIT, Pan IIT Alumni Association in Washington, and they did a good job. We have put out a video on in our YouTube channel, and the president of the Pan IIT Association of USA, Ron Gupta, he endorsed this book. That's a very big thing for us. He endorsed this book. And so then I came here to India, and I've actually, in my previous trip, we've had a very good conversation with people from IIT Madras. It's on my YouTube channel. You should watch it. Here, the IIT Madras faculty supporting my claim and not agreeing with the Harvard thesis and their book, giving back response that their statements are wrong. So I wanted the same kind of a discussion at IIT Kanpur. I addressed the whole gathering 2-3 weeks ago. They were all supportive, but the faculty was scared to come out and speak in IIT Kanpur. Let's see what happens next week. In 3-4 days, I'm in Mumbai, and I'm going to be meeting IIT Mumbai people. Let's see if they'll come out and stick their neck out. Privately, तो सब बोलते हैं. I have a lot of Zoom calls. Privately, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं. हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं आपको. But जब आप कैमरा ले आते हैं हम मीटिंग में, तो वो फिर कुछ और, they change the subject or something less like that. So we also have a problem in fighting back. Our people have this problem in fighting back. अब ये इसका प्रॉब्लम ये होगा कि HR डिपार्टमेंट्स जो हैं USA में, उनको कहा जा रहा है कि ये हिंदू प्रॉब्लम है और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर कोटा होना चाहिए, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो
ब्राह्मण हैं, क्षत्रियास हैं, अपर कास्ट हैं, उनके ऊपर सावधान होना चाहिए. यू हैव टू कीप एन आई ऑन देम, यू हैव टू बी सस्पिशियस ऑफ देम कि वो ज़्यादा प्रमोशन ले रहे हैं, क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, दलित्स को पीछे रख रहे हैं. दैट सॉर्ट ऑफ suspicion you must have. And when Americans start thinking in terms of racism in their country and start thinking of us as in those terms, it's very dangerous because that racism is a pretty bad thing and we are being accused of that. So ये अब जो बात है ये आ रही है HR डिपार्टमेंट्स में in USA, not only tech industry but pharma industry, automobile industry, banking industry, सब में आ रही है. और फिर उनको कहा जा रहा है कि जो आपकी इंडिया में सब्सिडरीज हैं वहाँ भी वही पॉलिसी होनी चाहिए. और जो इंडिया में जहाँ पर आप आउटसोर्सिंग करते हैं, TCS से या महिंद्रा से आप आउटसोर्सिंग करते हैं, एनीबडी हु इज़ आउटसोर्सिंग टू अमेरिका, उनके ऊपर भी ये रूल्स बनाओ. HR रूल्स हैव टू बी इम्पोज्ड ऑन देम. दे मस्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंट दीज न्यू पॉलिसीज. So this is a very serious matter. It's coming into the Indian workplace, whether you're working in foreign country or in India, within your career, by the time you people get these jobs, this sort of thing is happening. It is not only for tech workers, बाकियों के लिए भी आ रहा है. तो अब ये you wonder कि who is America to हमको डांटना, हमको डंडा लगाना, how do they don't even know enough about our system. So this is why this book has been published. So I would like all of you take a copy. ये बहुत simple book है, not easy to read, 150 पेज की है. That will give you an idea, which is not only for IITians, it's for any career, any corporate thing. Same rules are applying. और ये अब laws, these kind of laws, caste के बारे में laws आ रहे हैं USA में. Universities have enacted it. Seattle Township has enacted it. Now many other townships are also thinking of enacting it. European Union में अब ये this same discussion has started to pass a bill in the European Union through tech and through corporate sector. हाँ, पहली ब्रेकिंग इंडिया थी जो हमने बहुत साल पहले बुक लिखी थी. दैट वाज मोर के भी विलेजर्स, जो पुअर विलेजर्स हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है. तो वो तो ब्रेकिंग इंडिया थी ग्रास रूट्स पे. अब ये ब्रेकिंग इंडिया है द टॉप लेवल, टेक वर्कर्स, कॉर्पोरेट पीपल. अब वहाँ पर जाके थोड़ी इंडिया को कैसे हाउ टू ब्रेक इट इनटू पीसेस. दिस इज वेरी डेंजरस. सो इसके साथ हमने एक और निकाली एक पुस्तक, वर्ना जाति कास्ट. सो मेनी पीपल फ्रॉम आवर टेक वर्कर्स came and said कि आप हमको थोड़ा समझा सकते हैं कि what is caste, हमको तो मालूम ही नहीं. और जो वो workshop, the people who are teaching workshop are talking all nonsense, हम क्या जवाब दें. Our people don't know कि क्या जवाब दें. They go to gurus कहते हैं हमारा काम नहीं, हम तो आपको गीता सिखा देंगे और या meditation सिखा देंगे. They go to their temple and temple says कि हम तुमको पूजा सिखा देंगे. ये बात बहुत controversial है, इसके बारे में हम नहीं सिखाएंगे. Parents don't know much. Media is also confused. तो कौन सिखाएगा? Who will? So we have written this book. This is another very simple 150 पेज की है. This book you must read. क्योंकि ये this is एक जवाब देती है, एक टूल किट है. This is a tool kit for our people how to talk back. कि आपसे कोई ऐसे बात करे तो कैसे आपको जवाब देना है. पहले तो इसमें जो हिस्ट्री है, वर्ना, पहले हमारे वेद में कोई कास्ट का नाम नहीं है. द वर्ड कास्ट इज नॉट इवन संस्कृत वर्ड, इट्स अ पोर्चुगीज वर्ड, यूरोपियंस लाए थे. तो ये वर्ना के व्हाट इज वर्ना, एंड इट इज नॉट बाय बर्थ, इट इज नॉट बाय बर्थ दैट वी एस्टैब्लिश. एंड सो कैसे वर्ना का, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ वर्ना एज ए वे ऑफ डिवाइडिंग सोशल कैपिटल. द सोशल कैपिटल शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड विद वन ग्रुप, इट शुड बी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, financial capital should be separate. That is how the Varna started. And it was not by birth. So then later in society, Jatis are formed. Jatis are professional associations that keep track of, that try to, control a particular profession. कोई masons हैं, कोई carpenters हैं, कोई chef हैं, कोई fishermen हैं, कोई farmer हैं, कोई कैसे तरह के weavers हैं, इस तरह के जाति फॉर्म.
and there is no superiority or inferiority business. They are all different jatis. They are trading with each other. Sometimes some of the jatis considered other backward caste. At one time they were very rich. अब जैसे metallurgy है, जो people who were metallurgy experts were in those days very rich, because the metallurgy product जो था इंडिया का वो एक्सपोर्ट होता था. Wood, steel, distillation of zinc, ये एक्सपोर्ट होती है चीज़ें. They were worth a lot per ounce, per weight, per gram or whatever, per unit of weight. They were very expensive. लेकिन वो जो वर्कर्स थे और जो आयरन वर्कर्स थे उस ज़माने के, कॉटन वर्कर्स थे, who were very rich in those days. आजकल के ज़माने में they are called scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste and things like that. तो वो उनकी इकोनॉमी कम होगी because of industrialization. Because of the industrial revolution, they lost their profession. So it is not because caste was always putting them down or anything like that. They were jatis that were flourishing. So many jatis were flourishing. India also had a Shudra dynasty. So many of the rulers were not necessarily upper caste. So many people who wrote some of the Shastras were not upper caste. So ये जो Jati structure, Varna structure, Jati structure is quite flexible. And then this book explains how in the last many centuries this became hierarchy. This got turned into hierarchy and lot of this abuse started. और उसका भी क्या remedies हैं, क्या इलाज है और कैसे there has been a pushback in society. Lot of movements from within the country have happened. Not any foreign people required to come and do danda. It's not like foreign people have to come and solve the problem. Foreign intervention makes the problem worse. और बढ़ जाती बात. So ये इस पुस्तक में इसमें लिखा है काफ़ी कुछ. And then I have also covered Ambedkar, a chapter on Ambedkar, because they use Ambedkar a lot to promote their argument. Ambedkar is a very brilliant man, no doubt about it. But also, he's also a bit mixed up. I'm giving him credit where credit is due. Ambedkar and Gandhi had debate on Hinduism and caste and all. And in fact, in that debate, I support Ambedkar rather than Gandhi. I do. But Ambedkar is also mixed up. वो कहता है he wants to convert people to Buddhism. ठीक बात है. Buddha dharma is a good, fine. लेकिन उनका जो Buddhism का interpretation है वो ठीक नहीं है. He says कि the meditation is not needed. Meditation के बिना how do you have Buddhism? Buddhism is known for its meditation. Meditation तो बहुत ही जो उनकी बात है, meditation की तो बात है. तो बट अम्बेडकर वेरी क्लियरली लाइज कि मैं अम्बेडकर इस ज़माने में मेडिटेशन का इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है एंड ही डजंट प्रैक्टिस इट. एंड देयर इज सम बुद्धिज़्म में है 4 नोबल ट्रूथ्स जो उनके मेन आइडिया है, 4 नोबल ट्रूथ्स कहलाता है. ही ऑल्सो डजंट प्रमोट दैट. तो उसके बिना फिर बुद्धिज़्म क्या हुई? इट इज़ नॉट रियली बुद्धिज़्म, वो तो कुछ और बात होगी ना. तो ये जो आइडियाज़ हैं अम्बेडकर के, दीज आर द ये फाउंडेशन है मॉडर्न अम्बेडकराइट मूवमेंट में. तो ये बुद्धिज़्म कहलाती है बट इट इज़ नॉट रियली बुद्धिज़्म. यू आस्क जो नॉर्मल बुद्धिस्ट है, जो दलाई लामा के फॉलोअर्स हैं, बाकी हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट कि ये बुद्धिज़्म के आइडियाज़ हैं. ये पॉलिटिकल कोई आइडियाज़ हैं बट बुद्धिज़्म के आइडियाज़ नहीं है. सो हमने ये भी कहा है. बट आई डू गिव क्रेडिट एंड रिस्पेक्ट टू अम्बेडकर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. और फिर बात है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो कास्ट सिस्टम है उसको मजबूत करके परमानेंट कर दिया. उनको करना चाहिए ये था कि जो इंडिविजुअल, नॉट कास्ट के बारे में, जो इंडिविजुअल कि बैकवर्ड फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, इनकम कम है, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको हेल्प मिलनी चाहिए. नॉट क्योंकि वो उनकी सारी कास्ट एक है, क्योंकि किसी एक कास्ट में कोई अमीर भी लोग हैं, दलित भी बहुत बिलियनियर, देयर आर बिलियनियर दलित्स ऑल्सो, और कई ब्राह्मण हैं जो गरीब भी हैं. सो यू कैनॉट से सारे लोग एक कास्ट के एक ही तरह के हैं. एक ही तरह के नहीं हैं, कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं. ऑल्सो यू नो आजकल जो कास्ट है, इट इज़ नॉट जो प्रिविलेज कास्ट है, जो ऊपर की कास्ट है, जिसने सारों को दबाया हुआ है, वो अंग्रेजियत कास्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज कास्ट. इंग्लिश लैंग्वेज इज कास्ट सिस्टम. पीपल वांट टू लर्न इंग्लिश ताकि उनको जॉब मिले, मैट्रीमोनियल प्रॉस्पेक्ट भी बढ़ जाते हैं कि उसको अंग्रेजी आ जाती है.
और अंग्रेजियत, इट इज़ नॉट जस्ट अंग्रेजी लैंग्वेज बट अंग्रेजियत जो स्टाइल है, वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, आप किसको कोट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में, क्या क्या वेस्टर्न थिंकर्स को कोट कर सकते हो, वो सब अंग्रेजियत ही तो हुआ। तो अंग्रेजियत इज़ द अपर कास्ट टुडे। इट इज़ नॉट कि संस्कृत इज़ द अपर कास्ट। कोई संस्कृत वाला जो पंडित है वो तो ही इज़ नॉट वेरी पावरफुल पर्सन, वो कोई ही डज नॉट रन द गवर्नमेंट एंड ही डज नॉट रन एनी मिनिस्ट्रीज, उसका क्या है। बट इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इन चार्ज। और वो इंग्लिश स्पीकिंग में भी क्या एक्सेंट से बोल रहा है, वो अमेरिकन एक्सेंट से बोल रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट से बोल रहा है, वो दिल्ली वाला पढ़े लिखे आदमी का ऊपर कास्ट अपर जो इलीट है वैसा एक्सेंट से बोल रहा है, या कोई बिहारी एक्सेंट का बोल रहा है। कि देयर इज दिस अ कास्ट सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज का कास्ट सिस्टम है। सो ये जो आजकल की कास्ट सिस्टम है, यू कैनॉट ब्लेम इट ऑन वेदास, ये वेदा की बात है नहीं, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो आई गिव लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, काफ़ी ऐसे हमने जवाब दिए हैं, और ये टूल किट है, यू शुड डेफिनेटली रीड दिस, आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरीबडी टू रीड। नाउ आई वांट टू ऑल्सो टॉक अबाउट ये जो स्नेक्स इन द गंगा बुक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, सम बहुत कुछ है, बट इट्स अ बिग बुक, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर जो 50 पेज का है, उसमें सारी समरी है, और बाकी जो 22 चैप्टर्स हैं उनकी एक एक पेज की ओवरव्यू, हर चैप्टर के शुरू में ओवरव्यू समरी। तो आप वो पढ़ लेंगे तो 100 पेजेस के अंदर आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि क्या इसमें लिखा है। और फिर जो कुछ भी आप में कोई बहस हो, डिबेट हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हो, आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उसी चैप्टर में जाके बाकी आप पढ़ सकते हैं, पर पहले आपको सिर्फ इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, विच यू कैन डू इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको पढ़ने से यू विल बी एबल टू आर्ग्यू बेटर एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अब मैं इसके बारे में आई वॉन्ट टू से अ फ्यू थिंग्स। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू नेसेसरली रिपीट जो आज सुबह हमने कहा था, सो लेट मी से अ फ्यू थिंग्स। एक तो ये है कि जो रियल फाइट है आजकल, हमारी जो संस्कृति की फाइट है, वो सोशल साइंसेस के ऊपर फाइट है, कि वैदिक सोशल साइंसेस होंगे या वेस्टर्न सोशल साइंसेस होंगे। जो अंग्रेज़ ले आए वो वेस्टर्न सोशल साइंसेस ले आए, और जो आप पढ़ते हैं वो भी वेस्टर्न सोशल साइंसेस ही है। जो सोशियोलॉजी है, जो सोशल थियोरी है, वो सब यूरोपियंस की है। पॉलिटिकल थॉट, सोशल थॉट, वो सब वेस्टर्न ही है। हमारी जो अपनी सोशल थॉट है वो बहुत कम ही पढ़ाई जाती है, उसमें यूपीएससी में बहुत कम होता है, और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें भी बहुत कम होता है। जहाँ भी आप जाएं, हमारी जो देश चल रहा है वो वेस्टर्न सोशल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के मुताबिक चल रहा है। एंड वैदिक सोशल थॉट अभी हमने उस पर जोर नहीं लगाया, उसके बारे में उसका करिकुलम भी नहीं बनाया, उसका पेडागॉजी नहीं निकाली, उसके बारे में मटेरियल नहीं पब्लिश किया जो पढ़ाया जा सके। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका फ़र्ज़ है, दे हैव टू डू दिस। नाउ आई हैड डिस्कशन दिल्ली में, ये वर्ल्ड बुक फेयर हो रही थी, कुछ अभी ख़त्म हुई है, तो वहाँ पर हमारी ये बुक लॉन्च जब हुई तो वहाँ पर काफ़ी सीनियर हमारे अपने हिंदू इंटेलेक्चुअल्स थे जो काफ़ी माने हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि वैदिक सोशल साइंस हम क्यों नहीं निकाल रहे, उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहे, वैदिक सोशल साइंसेस। अभी जो सोशल साइंसेस है वो तो सारा लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, वेस्टर्न टाइप है, हम अपना वैदिक क्यों नहीं कर रहे। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास है, हमारे पास महाभारत में ये हुआ, कितना लेडीज़ का आज विमेंस डे है, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द विमेन। हाँ, रोज़ ही होना चाहिए विमेंस डे, आज की क्या बात है। सो बट एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उन्होंने कहा कि महाभारत में देखो लेडीज़ का कितना था, हमारे शैविज़म में लेडीज़ का कितना है। दैट इज़ नॉट सोशल थियोरी। सोशल थियोरी और सोशल प्रैक्टिस आर अलग। सोशल प्रैक्टिस जो है ना, जो आपकी लाइफ में है, वो अलग चीज़ है। थियोरी जो है वो एक तरह की टैक्सोनॉमी है, एक तरह की कोडिफिकेशन, कोडिफाइड, उसको थियोरी बोलते हैं। जैसे अब नाट्यशास्त्र है, अब यू कैन डू डांस विदाउट नोइंग नाट्यशास्त्र, कर सकते हैं आप। यू कैन हैव आप म्यूज़िक कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं विदाउट नोइंग थियोरी।
तो थियोरी इज़ डिफरेंट, थियोरी और चीज़ है। आपको कुकिंग के बारे में थ्योरी नहीं पढ़नी है, पर आप शेफ़ बन सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं, आप इडली बना सकते हैं। यू कैन बी वेरी गुड कुक विदाउट नोइंग एनी थ्योरी। तो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई जाती है, जो ट्रांसमिट की जाती है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट करने के लिए थ्योरी चाहिए। जो प्रैक्टिस है वो अलग चीज़ है, थ्योरी है वो अलग चीज़ है। तो आई ट्राई टू कन्विंस देम कि हमारे पास सोशल प्रैक्टिसेस तो हैं, जो घरों में हैं, जो खासकर छोटे शहरों में है, प्रैक्टिस तो है हमारी संस्कृति के बारे में, लेकिन जो थ्योरी है, जो पढ़ाई जाती है, जिसके ऊपर इम्तिहान होता है, जिसके बेसिस पर लोगों को जॉब मिलती है, वो थ्योरी जो पढ़ाई जाती है वो इट इज़ नॉट आवर भारतीय थ्योरी। तो वो भी भारतीय थ्योरी होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ बिग डिबेट आई एम हैविंग विद द पीपल। और फिर ये एक और इस स्नेक्स इन द गंगा में बहुत हार्वर्ड के बारे में है, हार्वर्ड के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि ये जो हार्वर्ड है ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतना उसका रेपुटेशन है कि जो कुछ भी हार्वर्ड से निकलता है वो तो भी भगवान की बात है, वो तो देवता, हार्वर्ड तो एक तरह का देवता हो गया। तो वहाँ पर जो उसके पास भी वैसा हार्वर्ड का ठप्पा है, वो तो भी क्या बात है, हम तो उससे कुछ मुकाबला ही नहीं कर सकते, उसका सामना ही नहीं कर सकते, उससे बहस करने का भी फ़ायदा नहीं। तो लेकिन हमारी जो इन्फिनिटी फाउंडेशन है जब शुरू हुई थी, पहले हमने कितने साल उनको काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रांट दिए, फंडिंग दी, हमने दी, क्योंकि हमने सोचा कि वो ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, काम ठीक करेंगे। हमने अपनी तरफ से अपनी जेब का अपनी कमाई दी। फिर हमें मालूम हुआ कि ये तो गलत है, ये गलत काम कर रहे हैं, और जितना भी उनको पैसा दे दो वो काम तो वैसे ही करेंगे, तो उनको पैसे देने का फ़ायदा किया। तो फिर हमने उनको फंडिंग बंद कर दी। फिर उनको और गुस्सा आया, बिकॉज आई स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग देम। फिर हमने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप जो हमारे बारे में लिख रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे भारत के बारे में लिख रहे हैं, वो गलत है। तो दे वर इवन मोर एंग्री एट मी। सो ये जो हमने जब हार्वर्ड से इतने हमने हमारा उनके साथ लेन देन थी और काफ़ी हमारे साथ वास्ता था उनका, तो हमने देखा कि हार्वर्ड में इंडिया की जो काफ़ी अच्छी बातें हैं वो उन्होंने सीखी हैं, लेकिन इंडिया को अलग कर दिया है उन बातों से। इंडिया जैसे योग, वो क्रिश्चियन योग है, और योग को न्यूरो साइंस कह रहे हैं, न्यूरो साइंस, और मेडिटेशन को अपना कुछ अलग नाम बना दिया है। महर्षि महेश योगी के कुछ जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने 1960s और 1970s में सबसे पहले जो मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हुई कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, मेडिकल, कार्डियोलॉजी, ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, वो महर्षि महेश योगी के फॉलोअर्स ने की थी 1970s में। आई वॉज वन ऑफ द फॉलोअर्स, मेरे को मालूम है। तो ये फिर हार्वर्ड में एक डॉक्टर हर्ब बेंसन, अभी उनकी डेथ हो गई है कुछ साल पहले, ही वॉज इन हिज 90s, तो उन्होंने उसी को कॉपी करके अपना पेटेंट लगा दिया, अपनी बुक निकाल दी और कहा कि मैंने निकाली चीज़। और हार्वर्ड ने उसको बहुत माना, ही बिकेम अ वेरी बिग शॉट। गवर्नमेंट ने बड़ा फंडिंग दी, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी फंडिंग दी। अब ये आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, खूब सारे आयुर्वेद लोगों को ला रहे हैं इंडिया से। उनके सामने तो बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो पेपर छपता है उसमें आयुर्वेद का नाम नहीं होता, उसमें ऐसे हमारी कोई संस्कृति का नाम ही नहीं होता। उसमें अपने आप ही उन्होंने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब हर एक का इंडिविजुअल का अलग अलग मेडिसिन होगी। ये तो आयुर्वेद की बात है ना, हर एक का इंडिविजुअल होता है, एक ही गोली नहीं जो सबको चलती है, हर का अपना अपना सिस्टम होता है। और ये है जो डीएनए में क्या इफेक्ट होता है, एपिजेनेटिक्स में है, जेनेटिक्स में ये आयुर्वेद मेडिसिन और मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है, ये स्टडी किया जा रहा है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्टडी किया जा रहा है और उसमें से कई तरह के पैटर्न निकाले जा रहे हैं, तरह तरह के इलाज निकाले जा रहे हैं, जिनमें हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का कोई नाम निशान है ही नहीं। इसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब कि जो शेर है वो बकरी को खाकर हड़प देता है और हजम कर लेता है, और बकरी तो रहती नहीं। बकरी के नॉट से आई एम वेरी हैप्पी, शेर ने मेरे को खा लिया। स्टूपिड बकरी विल से ना कि मैं तो शेर के पेट में बैठ के भागूंगी। हाँ, इट वुड बी वेरी स्टूपिड। आई मीन, बट आवर पीपल आर सो फुलिश। यू टेल देम कि हमारा जो योग है उसको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो पीपल, लॉट ऑफ गुरुज से नहीं उससे तो बहुत अच्छी बात है, अब गोरे लोग भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हमको वो खरीद कर, हमारा नाम निशान निकाल कर
वो अपना ही समझेंगे तो इसलिए हमका फ़ायदा ही होगा. सम पीपल आर सो स्टूपिड, दे फील दैट वे, हमारे लोग ही. तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं. हार्वर्ड में एक अमेरिकन लिटरेरी फिगर थे 1800s में, उनका नाम था एमरसन, रैल्फ वॉल्डो एमरसन. ये जो एमरसन थे ना, ये बहुत बड़े लेखक थे, फिलासफर थे, और हार्वर्ड के फिगर थे. उस जमाने में इन लोगों को बॉस्टन ब्राह्मण्स कहा गया था. दे वर कॉल्ड बॉस्टन ब्राह्मण्स बिकॉज ये ब्राह्मण्स, ये दे वर लर्नेड पीपल. और उस जमाने में ब्राह्मण बड़ी अच्छी मानी जाती है चीज़ कि बहुत लर्नेड लोग होते हैं. एंड दे वर कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिकन थिंकर्स. अमेरिकन थिंकर्स को ऐसे कहा जाता था, बॉस्टन ब्राह्मण. तो उनमें से ये भी थे. और उन्होंने, ही वॉज अ मिनिस्टर इन द चर्च में जो प्रीस्ट होता है. तो ही स्टडीड उपनिषद्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन उपनिषद, संस्कृत नहीं आती थी. और उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, विच इज़ पब्लिश्ड, आप पढ़ सकते हैं. एमरसन, हमने एक बुक निकाली हमारी फाउंडेशन ने, हमने, उसका नाम है एमरसन एंड द लाइट ऑफ इंडिया. वो करीब 20 साल पहले नेशनल बुक ट्रस्ट से हमने पब्लिश करवाई थी, अभी भी प्रिंट में है. उसमें सारी कहानी है एमरसन की कि कैसे उसने हिंदू धर्म से सीखा, और हिंदू धर्म से सीखकर कैसे उसने अमेरिकन लिटरेचर और अमेरिकन थिंकिंग पर क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ. उसके डिसाइपल्स ही थे वॉल्ट विटमैन, थूरो, जो बहुत माने हुए थिंकर्स हैं, उसी के डिसाइपल्स थे. अब ये हुआ कि एमरसन हार्वर्ड आया करता था, वहाँ पर बहुत माना हुआ था. तो एक बार जब उन्होंने ये सारा कुछ हिंदू धर्म के बारे में सीखा और उनकी थिंकिंग चेंज हो गई, तो वो हार्वर्ड ने आके, एक बहुत फेमस उनका लेक्चर था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम नो लॉन्गर ए क्रिश्चियन, आई एम नो लॉन्गर, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ. वो क्रिश्चियन जो उनका जॉब था मिनिस्ट्री का, वो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने चर्च से. ही रिज़ाइंड एज ए क्रिश्चियन मिनिस्टर. और हार्वर्ड में उन्होंने बोला, और हार्वर्ड देन बैंड हिम फ्रॉम कमिंग बैक. कैंसल कल्चर जो आजकल होती है उस ज़माने में भी हो रही थी, मतलब ये आदमी को अब निकाल दो. बट ही वॉज वेरी फेमस मैन, वेरी फेमस. तो उसके जो फॉलोअर्स थे वो वेरी फेमस नेचुरली. सो अब ये कुछ साल, 15-20 साल, पता नहीं कितना, बट कुछ साल पहले उसकी एक एनिवर्सरी हो रही थी एमरसन की. हार्वर्ड ने बड़ी धूमधाम से, कि भी ही इज़ द सन ऑफ हार्वर्ड, बड़ी धूमधाम से उसकी एनिवर्सरी मनाई. एक हफ्ता खूब सारे लेक्चर्स हुए, उनके वेबसाइट बनाई, बहुत कुछ किया. तो मैंने कहा कि आपने इतने लेक्चर किए, इतने पैनल डिस्कशन किए, लेकिन ये बात का जिक्र ही नहीं किया कि ही रिजाइंड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड हार्वर्ड बैंड हिम. ये तो बहुत ही बड़ी बात है उसकी लाइफ में. हार्वर्ड ने, जिसने उनको बैन किया था, पर बाद में, उसकी डेथ के बाद में वो इतना फेमस हो गया कि हार्वर्ड उसको अपनाती है कि हमारा ही था आदमी, हमारा ही आदमी था, उसको निकालने के बाद. सो यू सी, दिस इज हिपोक्रेसी. जो मैंने हार्वर्ड को बोला कि इसके बारे में सिखाओ, वो नहीं सिखाएंगे, हम फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन एमरसन के बारे में सिखाओ, एमरसन एंड इंडियन थॉट, जैसे इसका कोर्स निकालो, वो नहीं निकालेंगे. फिर एक थे, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट के लोग कहते हैं कि 20th सेंचुरी के लीडिंग अमेरिकन पोइट टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जिसमें हिंदू शास्त्र के, ही टॉक्स अबाउट शांति शांति शांति, ही टॉक्स अबाउट ब्रह्मन, ही टॉक्स अबाउट ऑल काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी उनकी पोएम्स में ऐसे जिक्र किया है. लेकिन एक, देयर इज़ अ लेडी कॉल्ड क्लियो कर्न्स, हमारी मित्र है, शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ. तो उसने ब्रिटेन जाके अपनी पीएचडी की ऑन टी.एस. एलियट एंड इंडियन थॉट, कि टी.एस. एलियट का इंडियन थॉट का क्या इन्फ्लुएंस था. तो वो जाके उस वक्त टी.एस. एलियट की जो विडो थी, वो शी वाज स्टिल अलाइव, उससे, उसके घर में बैठकर उसने सारी टी.एस. एलियट की जो लाइब्रेरी थी वो देखी, और उसकी वाइफ ने उसको बताया कि जो टी.एस. एलियट के बेड साइड पर गीता थी, उपनिषद था, संस्कृत में, ही वॉज संस्कृत स्कॉलर,
और वो ही वॉज ट्रांसलेटिंग, वो संस्कृत ट्रांसलेट कर रहा था, हमारे जो शास्त्र हैं ट्रांसलेट कर रहा था, और वो मार्जिन में, किताब की मार्जिन में वो अपनी इंग्लिश में लिख रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, और वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं वो उसकी पोएम्स बन गई. Many of his famous poems, which are considered the most famous poems of American literature, are translations from Upanishads. It is written in this book called T.S. Eliot and Indic Traditions by Cleo Kearns. ये हमारे इन्फिनिटी फाउंडेशन ने निकाली है ये बुक. मैं उसको आपको कॉपीज भी भेज सकता हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. मैं भेज सकता हूँ. हमने उसकी इंडियन एडिशन भी निकाली थी, उसकी कुछ कॉपीज बची हुई हैं, मैं दे सकता हूँ. अब ये देखिए, इसी तरह से मैंने हार्वर्ड वालों को बहुत कुछ कहा, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जो हमारे से जो कुछ उन्होंने सीखा है उसके बारे में नहीं सिखाएंगे, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें गलत मलत वो निकाल रहे हैं वो करेंगे. तो इसीलिए हमको भी उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा है ना. आई एम एंग्री एट देम कि ये तो हिपोक्रेसी है. हमारा पैसा भी ले लिया लेकिन फिर कुछ किया नहीं ठीक तरह से. फाइनली आई विल क्लोज बिकॉज आई थिंक वी शुड हैव टाइम फॉर Q&A. थैंक यू.